I think we should start. Okay, so once again, good morning all. In the last lecture, we have discussed about numerical integrations, right? The three methods we have discussed: numerical integration by trapezoidal rule, then Simpson's 1/3 and Simpson's 3/8 rule, right? We have discussed the examples also. If we need, we'll discuss few more examples if we get a time, proper time. But now we'll start with the next point, that is very important: numerical solutions to the differential equations. Okay, in the first unit we have discussed about solution of differential equation in detail, right? How to get the general solution. The general solution is the combination of two sub solutions, complementary function and particular integral, right? So here in numerical also we can use the numerical techniques to solve the differential equations. I think we have used Z transform also. No, not Z transform. We can use the Laplace transform to solve the differential equation, but we don't have the Laplace transform in your syllabus in M3, but we can use the numerical methods to solve the differential equation. So this is my new topic now: numerical solutions to ordinary differential equations. We are discussing in particular about ordinary differential equations and their solutions by numerical methods. Okay, so here in this we are going to discuss the four methods, that is by or solution of ordinary differential equation by Taylor series, Taylor series expansion, then solution of ordinary differential equation by Euler's method, third is modified Euler's method, and fourth one is RK method. RK is Runge-Kutta method. The two scientists, they have invented this method, so Runge-Kutta method, RK method. So these are the four methods from numerical to solve the ordinary differential equation. So as we have discussed that ordinary differential equation, specifically we use these methods to solve the first order, first degree ordinary differential equation. Even we can use the methods to solve the higher order differential equation also, second order, third order. But here in this, most of the times will be asked to solve the ordinary differential equation of first order, first degree. So we should know the methods. And among these four methods, the last two are very important, third and fourth. Last two methods, that is modified Euler's method and Runge-Kutta method. But to understand about modified Euler's method, you should know about Euler's method first of all. Okay, this Taylor series method is completely different, and that is just like a iterative method, Taylor series method, which is very easy also, but that is not that much important. We'll discuss it. Okay, so these four methods we are going to solve, we are going to use to solve the ordinary differential equation. Now let me recall, we have discussed the ordinary differential equation, which we have reduced into the standard capital D form, phi of d into y is equals to some function of x on the right hand side, right? So this is linear differential equation of with constant coefficient, and its solution is the value of dependent variable, that is y, in terms of independent variable, that is x. So complementary function in terms of x plus particular integral in terms of x, right? So in this general solution, it involves some arbitrary constants, depends on the order of differential equation. If the given differential equation of order 2, then it will, or its general solution will involve two arbitrary constants, complementary function, right?
Are you getting my point? If it is of order 2, then we'll be having two solutions of its auxiliary equation, right? And based on the nature of those roots or the solutions, we write the complete complementary function, right? So if the two roots, then two arbitrary constants accordingly. So what we are going to do actually in this numerical solutions to ordinary differential equation, we are not going to find such general solutions. We are finding the particular solutions to the differential equations. So the solutions obtained using these methods will not involve such arbitrary constants which we have obtained in the linear differential equation first unit, right? So that thing you must have to remember, that the solutions obtained by these methods are not general solutions, they are particular solutions. Particular means, suppose if the solution obtained by these the techniques we have discussed in the first unit, suppose the solution is like y is equal to say c1x plus c2 plus say something 1 by 12, whatever. Okay, so this is the general solution. And what is the particular solution of this? For any value of ci is c1, c2, if I fix c1 to be 1 and c2 to be 2, then what it will be? Y plus x plus 2 plus 1 by 12. So what it will be? X plus 25 by 2, right? So this is my particular solution, particularly for the values of C1 and C2 to be 1 and 2, like this. So such solutions we are going to obtain from these four methods, remember, not this. This is a general solution and this is called a particular solution. Particular solution, not the particular integral. Remember, these are the two different things, particular solution and the particular integral. Is it clear to all? So from the method, numerical methods, we are going to obtain the particular solution. Is it clear to all? Please reply. Yes, sir. So let us start with one by one. First of all, as these two methods are very important, so I'm going to concentrate over these two methods only, but I'm going to discuss in detail about all the methods. Okay, and first of all, I'm thinking to discuss about the first three methods combinedly, and then we'll discuss the examples on that. The RK method is completely different, and this is also the completely different. So I'll discuss. I'll give more time to RK method, because that is very, very, very important. In earlier pattern also, there was compulsory question on this RK method, and that is the convenient method. It will give the very accurate solution. I'm not saying accurate solution, but that is close to the accurate solution by RK method, and even by modified Euler's method also. So let us discuss one by one. First of all, Taylor's method or Taylor series method to solve the ordinary differential equation. All right. So first of all, tell me, what is the formula for Taylor series? What is the Taylor series expansion of any function? Y equals to f of x. Yes. If I have given the initial condition, x is equal to x naught and y is equal to y naught. What is the Taylor series expansion? Yes, please. Anyone? I think we have discussed the Taylor series expansion in the beginning of numerical also, when we have discussed, when we have started to discuss about interpolation. So what is the Taylor series expansion? F of x plus Equals f to dash of x into x minus x0. f of x is equals to function at initial value F f of of x naught, right? f of x0 plus f dash of x0 into x minus x0 upon 1 factorial Correct. plus Plus f double dash of f x0 double dash at x naught upon 2 2 factorial factorial into into x minus x naught square square. plus x naught. Thank you, So Aish. thank you, sir. So this is Taylor series expansion formula. So this is the only formula we are going to apply. F of function at x naught means what? When I substitute the value of x to be x naught, then the corresponding value of y will be y naught, isn't it? So this is y naught. So if I write in terms of y and yi's,
then this will be f of x is nothing but y. So y is equals to, this is y naught plus x minus x naught, right? And f of x naught, and its dash means derivative. So that is nothing but the y naught dash. Is it? F of x naught dash means y naught dash. Remember, y naught dash. That is just a notation. Don't get confused with this notation. Y naught ka first order derivative. Plus x minus x naught square upon 2 factorial into y naught double dash, right? Actually, y naught dash means what? Y naught dash means what? Y dash at x naught, right? Y dash at x naught. Is it clear to all? So don't get confused. This is just a notation. I am taking this x naught to be in the suffix y naught. Just like x naught के corresponding कौन होता है? Y naught. So I am just changing the suffixes. ऐसा नहीं है कि x naught is equal to 0. That is not the meaning of this. x naught का value 0 नहीं है. x naught के corresponding y का value क्या है? Y naught. That is what the notation is. Okay. तो ये है y naught dash, y naught double dash, and so on. Okay. So from the given differential equation, first of all, will be given the first order first degree differential equation, suppose. Okay, just like solve dy by dx is equal to some function of x and y, suppose. Okay, and with the initial conditions that x is equal to x naught given, and or the initial condition will be given like this: y at x naught will be equals to y naught. So what is the initial value of x? X naught. And what is the initial value of y? Y naught. So we'll start with these initial conditions only to get the solutions. So actually the solution of this differential equation is the value of y. That is what, nothing but this. Okay, we'll be having y naught. We'll be having the derivatives of successive derivatives of that y naught at the particular value of x naught. Whatever the x naught given, suppose that x naught is constant given, then we just have to substitute the derivative, we just have to substitute that x naught value into the successive derivatives. All right, that is what the thing is. Nothing else. I think I should discuss the next two methods, and then combinedly we'll discuss the examples on this. Is it okay to all? Or should I discuss the example on this method only here? It will save the time. However you want. Anyhow. So I'm thinking to discuss the three methods first, and then the examples combinedly. Is it okay to all? Yes, sir. Okay. So remember, this is the formula by Taylor series expansion. Okay, so from whatever the given differential equation, we are going to obtain y naught is given, x and x naught where we'll be having, we just have to substitute x naught here. Okay, we'll get x minus x naught in terms of x, isn't it? And this y naught dash means whatever the derivative, uska value hum find out करेंगे at x naught, that will be y naught dash. अगर second order derivative है तो वो भी substitute करेंगे, है ना? तो ऐसे हम values इसमें substitute करेंगे, and that will be the required final solution. Remember, that is only the thing in Taylor series method. That is again very easy. Now the next is Euler's method. What Euler says, second, Euler is the name of scientist. You might have seen in Cauchy-Euler's condition and all. Eulers have a great contribution in complex also, that we are going to discuss in the last unit. Euler's method. So what the Euler says, suppose if you have given the differential equation dy by dx is equal to some function of x and y with the initial conditions y at x naught to be y naught, then Euler says the solution of this differential equation will be obtained directly by separating the variables, and once we have variable separable form, we integrate it.
isn't it? So Eulers go by that way. That is, here first of all separated the variables like dy is equal to function of xy into dx. Okay, and initially, since these initial conditions have given, you have substituted these conditions into the given function. So at these conditions, x naught and y naught, what will be my function? F of x naught, f of x y at these values x naught comma y naught will be what? Function at x naught y naught. Clear? F of x y at this x naught y naught is f of x naught y naught. I'll substitute x is equal to x naught and y equal to y naught into this. Okay, so what he have assumed, this value to be constant initially. So when we have substituted into this, and this is a variable separable form, we integrate it with the limits given. So since, so what we'll do, we'll find these values into the according to the requirement. If we ask to find the value of function at first step, that means x naught plus h, what is the value of a function? X naught plus h will be x1. So at x1 we'll get the value of y to be y1. So these iterations we are going to obtain from this, and then finally we'll collect all those iterations. Okay. So here when I integrate both sides, the left hand side will be from y0 to y1 dy is equal to integration of f of xy dx from x0 to x1. And as I said initially, he have assumed this function to be constant at x0 y0. So that will be f of x0 y0 into integration from x0 to x1 dx. So here what will be the value of this integration? That is y1 minus y0. Is it clear to all? Why? Because integration of dy will be y from this, with this limit, it will be y1 minus y0. Please ask if any doubt. Is equals to f of x0 y0 into, what is the integration of this? That is again x1 minus x0. Clear? But what is the value of x1 minus x0? If you remember, what is the value? H. That is the h, correct. That is the step length, right? So I'll substitute here. I'll be having, I'll take this y0 onto the right hand side. So I'll get the next value. See, I'm having y0. I'm going to find the next value of y, that is y1. Okay. So y1 will be y0 based on the previous value plus this is my h times f of x0 y0. Is it clear to all up to this? So this is the first ordinate obtained by Euler's method. Okay, so what we are going to do, we are going to find such ordinates successively, and we'll repeat the same procedure till and until we'll get the value of these yi's to be same after the decimal places. Okay, if we consider the 4 decimal places, then we should get the same decimal places. Okay, and if it is same, then we'll stop the procedure, we'll terminate. If it is not same, then we'll keep on continuing with this. Okay. So now I'm having y0, y1 also. At this step, I'm having y1 also. And do I have x1? Can I find x1 if h is given, or I can even consider any value of h. So can I have x1? Yes, sir, by h or x0. Yes, since x1 is x0 plus h, right? So I know x0 from the initial condition. I know the value of h also, isn't it? So I can get the value of x1, and from this formula, I'll get the value of y1 also. So what I'm having at this step now? At this step, I'm having the value of x1 comma y1, this point. Is it clear to all? And now with this point, I'll start to find the next iterative formula. So what is my next? So what Eulers will assume? Eulers will consider the function value at this point to be the constant, that is f of x1 y1. Okay, and with the help of that, he will try to find the value of y2. So how do I write with the same thing? Y2 will be equals to, yes, y1 plus h times function at x1 y1. With this
similar thing. Is it clear to all? Because here I'll have to integrate from y1 to y2, isn't it? x1 to x2, f of xy. But at this point, Euler have assumed the function value to be constant. So we'll take it outside the integration, and then we'll integrate from x1 to x2 like this. Is it clear to all the second iterative formula? Please ask if any doubt, or do reply in the chat box. Everyone. Clear. Everyone, please write in chat box if any doubt. If no doubt, just say no. No, sir. Okay, and in this way, मतलब अगर y1 का whatever the value, suppose y1 का value है 1.4325, okay, and then y2 का value है 1.432 and say 43 like this. So are they same? No, isn't it? If I'm considering the value up to 4 decimal, then fourth decimal value is not same, isn't it? So I'll not terminate this process. I'll again find the next iterative formula, and if it gives the same value, then I'll stop there. अगर फिर से नहीं आता है तो फिर से मुझे रिपीट करना है ये इटरेशन, तब तक जब तक मेरे डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं आते. क्लियर? ऐसे ही करते जाना है आपको. So that is slight lengthier one, and that is not that much accurate also. So again, Euler have modified his formula. He have some modifications into his formula to approach to get the correct value, I can say. Not the accurate value, but very much close to the accurate value. He have some modifications into his formulas. Sir, can you repeat your last statement about 1.423? Okay, so if the value of this y1 obtained, see, y1 will be constant, clear to all, because at x0 is constant value, so at x0 y is also constant, so x0 y0 will be a constant value. So the function at x0 y0 is also a constant function or constant value. Clear? ये भी constant है, h भी constant है, and y0 तो constant है, so इनका addition will be constant. Suppose that y1 value is 1.4, क्या था मैं भूल गया अभी, 4325 सपोज, ठीक है. y0 का अगर ये वैल्यू है, और सपोज इट विल बी 4325 7 8 9 व्हाटएवर, एंड y2 का वैल्यू अगर आपके पास आता है y1 इज इक्वल्स टू 1.43248 ऐसे कुछ तो है, isn't it? And if we ask to find the value correct up to 4 decimal places, ऐसा अगर दिया है एग्जाम में, correct up to 4 decimal places, then we'll check or we'll consider only 4 decimal places after the decimal point, isn't it? And if we compare this and this, then they are not same. Clear? 4325 here, 4324, so one decimal place is not same, so still it is not same, therefore we'll have to again go for the next iteration formula, that is y3. Y3 will be y2 plus h times f of x2 y2. Is it clear, Ayush? Yes, sir. करते जाना है जब तक आपको Yes, sir. exact value नहीं मिलता. No matter for the next decimal places, अगर आपको 2 ही decimal places तक पूछा है, then आपको 2 ही decimal places तक check करना है. Okay? अगर आपको 4 decimal places तक पूछा है, then you'll have to check up to 4 decimal places like this. Now, to get the correct accurate answer, Euler have some modifications into his formula. What is Euler's formula? First iterative formula is y1 is equals to y0 plus h times function at x0 y0. So what he does, he have modified this value. ये जो वैल्यू है इसमें उसको डाउट लगा, तो उसने क्या किया, उसने पहले तो okay, from this value he'll get the value of y1, right, and he'll be having x1 also. So
he is having x1 y1 now. So what he have done, he have evaluated the value of this function at this point x1 y1 and then he have taken the average of this and this value. मतलब ये उसके पास वैल्यू है, तो ये जो f of x नॉट y नॉट है एंड ये जो f of x1 y1 है, इन दोनों का एवरेज इसने यहाँ यूज किया, दोनों का एवरेज, एंड दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्मूला. क्लियर? मतलब instead of this f of x naught y naught, he have used the average of this and the function value at next point. दोनों का एवरेज लेके वो वैल्यू उसने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया instead of the original function. Okay, and then उसको उसने डिनोट किया फर्स्ट इटरेशन और फर्स्ट मॉडिफिकेशन, that is y1 1 I can say, or y1 prime, double prime, triple prime. Clear? So now let me clear. He have started, the first step is he have evaluated his first ordinate y1 with the help of his basic formula, that is y naught plus f of x naught y naught. इसी से उसने y1 का वैल्यू फाइंड आउट किया. ठीक है, लेकिन उसको चेक करना है कि whether the y1 value is more accurate or what. तो उसने क्या किया, इसी में मॉडिफिकेशंस किया, इसी वैल्यू में मॉडिफिकेशंस किए. कैसे किए कि फर्स्ट मॉडिफिकेशन विल बी y1 प्राइम. तो y1 प्राइम क्या होगा, y नॉट प्लस, सॉरी यहाँ h है, h टाइम्स y नॉट प्लस h टाइम्स ये जो फंक्शन है इसमें उसने मॉडिफिकेशन किया. क्या मॉडिफिकेशन किया, एवरेज लिया, f ऑफ x नॉट y नॉट प्लस f ऑफ x1 y1 अपॉन 2. क्लियर? एंड उसको डिनोट कर दिया फर्स्ट मॉडिफिकेशन से. अभी भी उसको लग रहा है कि दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू विच आई वांट, इजंट इट? तो इसमें फिर से उसने मॉडिफिकेशन किया. क्या मॉडिफिकेशन किया, यही फॉर्मूला यूज किया. अभी उसके पास क्या है, x1 का वैल्यू तो है ऑलरेडी, y1 जो था इसमें अभी उसके पास मॉडिफाइड वैल्यू है, क्या, y1 1. इज इट क्लियर? एट दिस स्टेप ही इज हैविंग x1 and y1 prime. Everyone, is it clear? Yes, sir. At this step he is having x1 and y1. तो इसका यूज किया फर्स्ट मॉडिफिकेशन के लिए. अभी ये कैलकुलेट करने के बाद उसके पास क्या है, x1 and y1 प्राइम. ओके, तो इसका यूज करके उसने सेकेंड मॉडिफिकेशन किया, इसमें इसी में y1 में ही सेकेंड मॉडिफिकेशन किया. कैसे, y1 डबल प्राइम. I'll denote it by y1 double prime. So that will be y naught plus h time. क्या करना है, जहां जहां y का वैल्यू है, मतलब y1 अभी उसके पास न्यू वैल्यू है ना इसकी, तो वही सब्स्टिट्यूट करेंगे. रिमेनिंग थिंग्स आर सेम. सो h टाइम्स क्या होगा, f of x naught y naught plus f of x1 and y1 prime. फंक्शन एट x1 y1 प्राइम अपॉन 2. ये है उसका सेकेंड मॉडिफिकेशन, एंड सो ऑन. ऐसे करते जाएंगे जब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता, करेक्ट वैल्यू नहीं मिलता, तब तक. ये है मॉडिफिकेशंस. अगर उसने सेकेंड ऑर्डिनेट तक पूछा है, देन अभी देखो, अगर इन तीनों में अगर सेम वैल्यू देता है y1 और y1 prime or y1 double prime, then we'll fix that value to be the correct value. Clear? Clear है सबको? Yes, sir. अगर पहले दो मॉडिफिकेशन में या तीसरा भी अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर वैल्यू आपको सेम मिलता है, then we'll fix that value to be the correct value for y1. बेसिकली वो y1 ही ना, y1 ही है वो, उसी में हम मॉडिफिकेशंस कर रहे थे. ये जो प्राइम है, these are just modifications. बेसिक क्या है, y1. तो अगर वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, then that value will be the correct value for y1. अभी इसी के साथ हम आगे चलेंगे. तो ये है मेरा फाइनलाइज्ड वैल्यू. ठीक है, अगर एग्जाम में वो y2 तक पूछता है, then I'll start to find the value of y2 with the help of this only. ओके, तो y2 के लिए क्या होगा, y2 के लिए फिर से मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से बेसिक फॉर्मूला ऑफ ऑयलर. तो y2 के लिए क्या होगा, पहले तो मैं y2 का वैल्यू
बेसिक फॉर्मूला से फाइंड आउट करूंगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h टाइम्स फंक्शन एट x1 y1. Clear? But remember, this y1 value is not this y1 value or the previous y1 value. This y1 value is what? The finalized y1 value by some iterations, some modifications. Clear? Hello? Yes, Any sir. doubt? Yes, sir. हाँ, so this y1 value is the modified value, remember. तो इसी के साथ हम y2 के लिए स्टार्ट करेंगे. तो ये मुझे यहां से कुछ y2 का वैल्यू मिल जाएगा. अभी मैं चेक करूंगा कि some modifications gives the same value or what. इसी में मतलब first modification in y2, then second modification in y2 and so on. अगर ये same value देते हैं, then I'll finalize that value to be the correct value of y2, and that is my final answer. Clear है सबको? So क्या होगा? y21 will be y1 plus f of x1 y1 plus f of x2 y2, है ना? तो ये जो y2 है ये यहां से मिल जाएगा मुझे. ठीक है. अभी सेकेंड मॉडिफिकेशन में क्या होगा? y1 plus h टाइम्स f of x1 y1 plus f of x1, एंड ये जो है ये फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू है. ये मुझे कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, ऐसे. क्लियर है सबको? एंड आई विल गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ y2 फ्रॉम दिस, एंड दैट इज द modified Euler. That is the third method, modified Euler. अब पूछो किसी को कुछ डाउट होगा तो. Sir, Euler is only up to y1 and y2 values, and the prime values are for this one. Modified. Okay, okay. Yes. I just मॉडिफाइड ऑयलर है क्या? ऑयलर का जो है उसी में सब मॉडिफिकेशंस है. Okay. इसलिए द नेम इज मॉडिफाइड ऑयलर. सो व्हाटएवर द ऑयलर फॉर्मूला, उसी में हम मॉडिफिकेशंस फाइंड आउट करेंगे. दीज आर द मॉडिफिकेशन. ये जो प्राइम है ना, प्राइम डबल प्राइम, ये मॉडिफिकेशंस है, कुछ नहीं है. मॉडिफिकेशंस मतलब का क्या कि वी आर जस्ट चेकिंग वेदर दिस वैल्यू इज करेक्ट और व्हाट. तो ये वैल्यू चेक करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम उसी में मॉडिफिकेशंस फाइंड आउट करेंगे. एंड अगर वो मॉडिफिकेशन सेम वैल्यू देता है मुझे, देन आई विल से दिस इज माय करेक्ट वैल्यू. अगर नहीं देता है, जब तक नहीं देता तब तक मैं ये मॉडिफिकेशंस करते जाऊंगा. क्लियर है? Yes. Okay. So we'll discuss the combined examples now, and then we'll discuss about RK method later. Write down example. Write down. Solve the equation 5x dy by dx plus y square minus 2. Solve the equation 5x dy by dx plus y square minus 2 equal to 0. Subject to the conditions. अभी हम टेलर के ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं. This is the example based on the Taylor's. It will not mention there in examination using the Taylor or modified Euler or Euler sometimes. So the choice is ours. Okay. But to discuss about method, we'll discuss the example on Taylor, then Euler, and then modified Euler. So solve the equation 5x dy by dx plus y square minus 2 equal to 0, subject to the conditions at x is equal to 4, y equal to 1. At x is equal to 4, y equals to 1. Finding the solutions for 4 is less than x is less than 4.4. मतलब ज्यादा से ज्यादा x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 4 से 4.4 तक जाएगा.
solution. तो हम टेलर्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. लेट मी राइट द फॉर्मूला. टेलर्स फॉर्मूला. क्या है? y इक्वल्स टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू y नॉट डैश y not dash plus x minus x naught square square upon 2 factorial y naught double dash plus x minus x naught cube upon 3 factorial y naught triple dash plus and so on. sir. Here we have the liberty to solve by any method, no? Yes, yes. If it is not mentioned, अगर mention है कोई particular method, then we have to use that method only. So here y naught dash means what? Derivative at x naught. ये बात clear कर लो पहले. That is not y dash at 0. मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि most of the time students are substituting x is equal to 0 there to get y naught dash. So that is not the case. जो whatever the value given initially, that is my x naught. So what is here x naught and y naught given? X naught is 4 and y naught is 1. है ना? तो उस 4 के वैल्यू के ऊपर y डैश का वैल्यू विल बी y नॉट डैश. ये y नॉट डबल डैश क्या है? y डबल डैश एट x नॉट, ऐसे एंड सो ऑन. तो हम क्या करेंगे बेसिकली, इनके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे पहले एंड देन विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज. मतलब ये डेरिवेटिव है ना y नॉट डैश y नॉट डबल डैश, क्योंकि हमारे पास क्या है? x नॉट x नॉट x नॉट, ये तो है, ठीक है, ये तो गिवन है हमारे पास. हमें करना क्या है? सिर्फ इनके वैल्यूज फाइंड आउट करना है, इनके वैल्यूज फाइंड आउट करते जाना है ना. एंड वंस वी गेट द सफिशिएंट वैल्यूज ऑफ these derivatives, then we'll substitute all those values into this. Okay, and then by simplifying, by collecting the like terms, that will be my final value of y in terms of x, because x is arbitrary here, remaining values are constant. Clear है सबको? तो हमें करना क्या है? इनका वैल्यूज फाइंड आउट करना है. दैट इज अवर टारगेट. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज द मेन थिंग यू माइट बी थिंकिंग. Okay, so we'll start with the given differential equation only. What is the given differential equation? This. So I'll write in simplified form. ये dy by dx को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ? y dash. Y dash, right? So I can write this equation, let given differential equation to be five x y dash plus y square minus 2 is equal to 0. यहां तक क्लियर है सबको? मैं सबको पूछता हूं लेकिन हाँ सर. आंसर कोई पर्टिकुलर ही देता है, ये हाँ हमेशा होता है. बाकी के स्टूडेंट्स को कुछ मतलब ये नहीं समझते कि हाँ जरूरी नहीं है रिप्लाई करना, है ना. ठीक है, एनीवेज आप समझ जाओगे जब आप इस फील्ड में आओगे, कोई टीचर होगा तो. एनीवेज अभी मेरे पास ये है एंड आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ y नॉट डैश. y नॉट डैश, तो मुझे करना क्या है कि wherever x is there, I'll have to substitute x to be x naught. Okay, and then I'll have to x to be x naught and y to be y naught. Okay, and then by on simplifying this, I'll get the value of y naught dash from this expression. तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. बाद में हम क्या करेंगे, पहले तो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालेंगे एंड देन विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो अभी क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू x नॉट मैं इसको लिखता हूं तो क्या होगा? y टू बी y नॉट, राइट? ये क्लियर है सबको? एट x टू बी x नॉट y विल बी y नॉट. तो ये दोनों को मैं इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो व्हाट विल बी माय इक्वेशन देन? देयरफॉर 5x नॉट, यहां मैं ये भी लिखता हूं, y डैश विल बी y नॉट डैश. अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो यहाँ जो y डैश है वो अभी फंक्शन ऑफ x है, तो मैं x को अगर x नॉट बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा? y डैश एट x नॉट. इसी को मैं क्या बोलता हूं?
y नॉट डैश। ये क्लियर है सबको, है ना? तो यहां से मुझे y नॉट डैश मिलेगा। ओके, सो दिस विल बी y नॉट डैश प्लस y है सिर्फ, तो y मीन्स y ऑफ x, तो x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x नॉट, तो दिस विल बी y नॉट स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है सबको? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। तो यहां से मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो क्या होगा वो, y नॉट डैश विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा, ये 2 यहां जाएगा, 2 माइनस y नॉट स्क्वायर अपॉन 5x नॉट, वट एवर इट इज। इज इट क्लियर? तो ये है मुझे, this is the formula to get y naught dash to substitute here. Hello, is it clear to all? Yes, yes, sir. Okay. 1/20. Huh? 0.05. 0. 1/20. 1/20. 1/20. Y not dash Okay, equal to 1 by Y not dash equals to. okay, direct value. I thought that there is something wrong here. Okay, 1/20 is the value of y naught dash. Clear? Clear है सबको? तो यहां से आपको y naught dash का वैल्यू मिल गया 0.025। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसी को मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएट करके y नॉट डबल डैश, y नॉट ट्रिपल डैश, y नॉट फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे करते जाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर, डिफरेंशिएट। वो डिग्री कितने तक ले जानी है, मतलब वो ये y नॉट ट्रिपल डैश 4? दैट इज आवर चॉइस एक्चुअली, कहाँ तक लेके जाना है। मोस्ट प्रोबेबली थर्ड तक ही लेके जाते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इस मेथड के ऊपर अभी तक एग्जांपल नहीं पूछा है ना? तो एग्जामिनर को क्या एक्सपेक्ट है, आई डोंट नो। सो व्हाट विल डू, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव्स अप टू फर्स्ट 4 और 5 डेरिवेटिव्स, 4 और 5 डेरिवेटिव्स तक इनका वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। इजी है ना? एंड विल राइट द एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ दोस डेरिवेटिव्स अगर पूछते हैं तो। बट वी शुड नो हाउ टू सॉल्व और हाउ टू गेट द इक्वेशन यूजिंग द टेलर्स फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू ऑल? हम सिर्फ मेथड देख रहे हैं यहाँ। ओके। एंड ये जो है वो जस्ट लाइक इंटरपोलेशन नहीं है। इंटरपोलेशन में क्या होता था, ये प्रोसेस टर्मिनेट होता था। आपको याद होगा कि आफ्टर सम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव क्या होता था, 0 हो जाता था। तो उस केस में वहां तक ही हम करते थे, तो विल गेट द फाइनाइट पॉलिनोमियल। बट इस केस में ऐसा नहीं है, द सॉल्यूशन में भी इनफाइनाइट। ओके, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम प्लस एंड सो ऑन ऐसे ही लिखेंगे। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? तो यहाँ क्या करेंगे हम, इनके बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो 5 इंटू क्या होगा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 y डैश प्लस x इंटू y डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, यस X Y double dash. y डबल डैश, करेक्ट, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y 2y इंटू y का फिर से डेरिवेटिव dy by dx मतलब y dash. y डैश। ये हैबिचुअली हम भूलते हैं, सिर्फ y का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y लिखते हैं, लेकिन y स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x ना, सो उसमें हमें चेन रूल भी यूज करना पड़ेगा। सो 2y y डैश एंड -2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है भी कि यहां से मुझे y नॉट मतलब एट x नॉट ये y डैश क्या होगा, y नॉट डैश, ये x नॉट, ये y नॉट डैश, एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ y नॉट डैश। तो इसको भी मैं सब्स्टिट्यूट करके यहां से मुझे क्या मिलेगा, यस क्या मिलेगा, y नॉट डबल डैश। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। Is it clear to all? From this equation, I will get the value of y not double dash. अभी मैं वो elaborate नहीं करता क्योंकि उतना टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। कि मैं जहां x है, एक्चुअली यहाँ x नहीं दिखाई दे रहा है, so most of the students may get confused in this, लेकिन है इनडायरेक्टली y डैश मतलब y डैश एट x। तो x को मैं जब x नॉट सब्स्टिट्यूट करूंगा
तो y नॉट डैश हो जाएगा वो x नॉट y नॉट डबल डैश y नॉट एंड y नॉट डैश. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद नोटेशंस. तो एक बार कैलकुलेट करो क्या होगा y नॉट डबल डैश का वैल्यू. एक बार करो तो एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y नॉट डबल डैश. अगर क्लियर है सबको तो. -7/400. -7/400. ओके नेगेटिव तो है वो. -6/400. -6 बाय. हम्म. एक बार उसको डेसिमल में करो तो कितना आता है मुझे बताओ. मेरे पास वो वैल्यू है पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग. -0.0175. हाँ करेक्ट. दैट इज द वैल्यू आई एम हैविंग. y नॉट डबल डैश इज -0.0175. हाँ हर्षल गलत हुआ है तेरा एक डिजिट. 0.0175 है ना. ये कितना है 0.05. क्लियर है सबको. तो यहां से मैं क्या करूंगा. मेरे पास अभी y नॉट डबल डैश का वैल्यू है तो ये वैल्यू मैं यूज करूंगा नेक्स्ट डेरिवेटिव के लिए. तो नेक्स्ट डेरिवेटिव में मैं इसको सबसे आई कॉल दिस एज अ इक्वेशन 2 एंड देन आई डिफरेंशिएट इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट I'll get y ट्रिपल डैश. So to get y naught triple dash, I'll substitute all the previous value into that. So I'll get y naught triple dash. ऐसे करते जाऊंगा मैं. And then finally, I'll substitute all those values of derivatives into the main Taylor's formula to get the solution. That is what my general solution. Clear है सबको? यस सर. बहुत लेंदी तो है. हाँ सर. Okay, I think it's time, right? I thought that we'll discuss the one example on each, but anyways, we'll discuss the example tomorrow. See here, you might have seen the new timetable. We are having 4 lectures per week now, okay? Because university may declare the new examination schedule in December only, May. Okay, so in that case, we should be prepared for the examination. Clear है? तो इसलिए हमने न्यू टाइम टेबल बनाया है. अगर हाँ सर अगर दिसंबर में एग्जाम होगा तो फिर वो डिप्लोमा वाले एग्जाम मतलब एंट्री करेंगे तो फिर उन लोग के वैसे तो बहुत सारे सवाल है लेकिन हाँ. फिर भी जैसे कि अभी बैकलॉग एग्जामिनेशन का शेड्यूल आया है ना. आपने देखा भी होगा. तो वैसे अगर यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है कि फर्स्ट 4 यूनिट पे हम रेगुलर स्टूडेंट्स का भी लेते हैं मतलब तब तक तो दिसंबर तक शायद दिसंबर एंड तक तो डिप्लोमा का भी एडमिशन हो जाएगा. आज 1-2 दिन में डिप्लोमा का रिजल्ट आ जाएगा और उसके एडमिशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. नवंबर में डिप्लोमा का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा. सो मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विद द डिप्लोमा स्टूडेंट डायरेक्ट के स्टूडेंट्स फ्रॉम 1st of December मोस्ट प्रोबेबली अगर एडमिशन कंप्लीट हो जाते. फर्स्ट ईयर के भी सीईटी का रिजल्ट लग जाएगा. तो वंस द रिजल्ट डिक्लेयर फर्स्ट ईयर एडमिशंस विल गेट स्टार्ट. ठीक है. तो हम दिसंबर तक तो प्रिपेयर रहेंगे एग्जाम के लिए. ठीक है. क्योंकि 2 लेक्चर से सिलेबस नहीं होगा. ऑलरेडी वी हैव स्पेंड 35 to 36 lectures only 2.5 units. That's too much actually. University have given only 9 lectures per unit. हमने बहुत डिटेल में किया है और some technical problems भी थे है ना. तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड कम था लेकिन ठीक है अभी हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. इसलिए तो आपको थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा. अगर किसी भी कंसेप्ट में डाउट है कोई भी कंसेप्ट रिपीट करना है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा. अदरवाइज मैं मेरे स्पीड से चलूंगा. ठीक है. एंड प्लीज डोंट माइंड अगर किसी को कुछ डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको पूछना है क्योंकि आपको वो डाउट क्लियर करना है. क्लियर टू ऑल? So I'm going to stop now. We'll discuss further examples in next lecture tomorrow. I think daily will be having lectures. So thank you all. Thank you, sir.